हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्ट्रोल विथ मी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आ गई हूँ नीदरलैंड्स में और ऐसी दो इतनी अच्छी जगह मैं आपको लेके जाऊँगी जहाँ जाकर आपको मेरे साथ इस वीडियो में बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि एक तो मैं बहुत अच्छी जगह लेके जा रही हूँ जहाँ आपको बहुत पॉलिटिकल हिस्ट्री देखने को मिलेगी, एंड मैं कम्प्लीटली और एक दूसरी जगह लेके जा रही हूँ जहाँ आपको बहुत एक यूनिक पॉटरी देखने को मिलेगी। तो ये डेफिनेटली इंटरेस्टिंग वीडियो होगा आपके लिए, क्योंकि आप तब यहाँ आओगे नीदरलैंड्स तो डेफिनेटली ये प्लेसेस तो ज़रूर देखोगे। सो यू डेफिनेटली शुड नॉट मिस दिस। चलो अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एंड आपको दिखाते हैं हमारा वेरी फर्स्ट लोकेशन बेननहॉफ इन डेन हैग। Next day and we are at Venenhof. Actually, the Venenhof is very close to Den Haag. I mean, I think it's just within Den Haag. And we are here. We got ready and we came here. And it is, the only specialty here is there is some government buildings here. I think there is a ministry building. There is also I think a minister, central affair minister, who also stays here. So it's just a place where the government official stays and also their buildings. So that's nothing but just Venenhof. It's a very cute little place. It's just near to the place where I'm staying. The place where Kavya is staying. It's just very close to that. So that's why we just came here to take a walk. And after this, in a few couple of in a 1 hour or so, then we go to Delft. So I'll show you just Venenhof very quickly. It's a very beautiful place, and today it's very sunny. That's why there are a lot of people that I can see. And there are also, if you see on my backside, so some guided tours which are happening. You can also take guided tour here in Venenhof if you want to. Those buildings are the ministry buildings here. That's why Venenhof is very famous, only because of those buildings. And all the minister stays here. And also my friend, he just told that the minister who are one of the ministers who stays here, every day he comes by bicycle here. Do you believe? See how people are actually trying to put an effort to save our planet, and he's coming by bicycle. That's really amazing to hear the fact. And it's really a beautiful place, and there is a small canal here, and also those buildings, they look like townhouses for me, next to next, one by one, but they are very beautiful and very lovely. एंड गाइस, यहाँ सितंबर में ना 3rd ट्यूसडे इन सितंबर स्पेशली नेशनल बजट डे होता है, जहाँ किंग अपने गवर्नमेंटल फाइनेंशियल प्लान्स डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ईयर के। एंड ऑन द सेम डे द किंग एंड क्वीन बोथ टेक्स ए टूर इन अ गोल्ड स्टेट कोच। एक गोल्डन स्टेट, रियली लिटरली गोल्ड से बना हुआ होता है शायद, एक कोच में ये लोग टूर करते हैं थ्रू आउट बेननहॉफ और डेन हैग में। एंड ये टूर सच में बहुत इंटरेस्टिंग होता है। अगर आप यहाँ आ रहे हो घूमने एंड स्पेशली सितंबर आ रहे हो, देन डेफिनेटली डोंट मिस दिस टूर। Or on the way to Delft after taking a tour for 2 to 2.5 hours in Benenhof. सो डेल्फ इसीलिए इतना फेमस है क्योंकि यहाँ के बहुत फेमस पेंटर जॉनस वर्मीर ने अपने पेंटिंग्स वर्ल्ड वाइड में उनको फेमस बनाया है विथ हिज आर्ट। और इतनी यूनिक थी ये पेंटिंग, सिर्फ 18 पेंटिंग्स बनाई है, फिर भी इतनी यूनिक थी कि सारी दुनिया इनको पहचानती है आज के दिन। The tower that you see on my backside, it's the Catholic Church here of Delft, and it is one of the very, very, very biggest attractions.
सो फाइनली गाइस, आज हम लोग बेनहॉफ घूमने के बाद एंड डेल्फ्ट घूमने के बाद फाइनली घर जा रहे हैं एंड दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू लाइक्ड इट. इफ़ यू लाइक प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इस वीडियो को भी लाइक कर दो एंड शेयर कर दो सबके साथ एंड आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट वीक. बाय.